Hi, my name is Hira Shaheen, and today in this video we are going to study about regular grammars. In the previous video we have seen what is regular language and we have seen what is regular expressions. So now we'll study in this video what it is regular grammar. So here it is regular grammar is denoted by a quadruple, which is set of four tuples, that is V, T, P, S, where V is the rule alphabets, or you can say it is variables or non-terminals. Variables or non-terminals. And it will also contain terminals. Okay. Then we have T. T is only terminals. That is alphabets. Okay. That is alphabets. It is, you will see that this will be in small letters. Then we have uh, P. P is a production rules. P is production rules. Generally of type A drives B. This type is called production rules, or you can say simply rules. Then S is your start symbol. ठीक है, इन्हीं चारों से मिला के हमारा रेगुलर ग्रामर बनता है. VTPS. T is for terminus, or you can say the set of terminus, and it is a subset of V. V में आपका टर्मिनल और नॉन टर्मिनल दोनों आता है, एंड T में टर्मिनल्स होंगे सिर्फ. कहने का मतलब है कि सपोज आपका ये क्या है, X derives AY, suppose. So here X and Y are non-terminal. X non-terminals जनरली आप देखेंगे कि कैपिटल लेटर्स में होंगे, और टर्मिनल्स क्या है, स्मॉल लेटर्स में. ये जो स्मॉल ए लिखा है ये टर्मिनल है. और जब हम वेरिएबल की बात करेंगे तो ये सभी सारे वेरिएबल्स ही हैं. ये एक्स भी वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, ये वाई भी वेरिएबल है. बट वी में क्या है, टर्मिनल्स भी है, नॉन टर्मिनल्स भी है, और टी में सिर्फ टर्मिनल्स है, यानी अल्फाबेट्स. ओके. नाउ सी some examples. So, regular grammar, all rules must have left hand side a single non-terminal. Some rules are there. So, what is this in regular grammar? In regular grammar, all rules, all rules or all production rules must have production rules must have left hand side single non-terminal. Left hand side single non-terminal. नॉन टर्मिनल्स को हम शॉर्ट में NT भी लिखते हैं. ठीक है, जैसे मैंने अभी ऊपर लिखा था NT. तो यहाँ क्या कहने का मतलब है, जैसे X डिराइव्स हमने लिखा AY. ठीक है, तो ये क्या है, ये राइट हैंड साइड है और ये लेफ्ट हैंड साइड है. प्रोडक्शन रूल कोई भी अगर हमारा है X डिराइव्स Y, तो ये लेफ्ट राइट हैंड साइड ही Y हो गया और ये लेफ्ट हैंड साइड हो गया. तो ये क्या कहता है कि जितने भी प्रोडक्शन रूल होंगे उसके लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा, सिंगल नॉन टर्मिनल होंगे. ठीक है.
और राइट हैंड साइड में क्या हो सकता है? And have a right hand side, that is right hand side. It can be epsilon or a single terminal or a single terminal followed by single non-terminal. Okay, followed by single non-terminal. तो इसका क्या मतलब है कि राइट हैंड साइड में क्या हो सकते हैं, या तो एक्स डिराइव्स एप्सिलॉन हो सकता है, जैसे ये लेफ्ट हैंड साइड में एक नॉन टर्मिनल होगा, ठीक है, जरूरी है। राइट हैंड साइड में एप्सिलॉन भी हो सकता है। एप्सिलॉन का मतलब क्या होता है? मीन्स यू कैन से इट इज नल, you can say it is null. Epsilon means null, or you can say that it is without taking anything, it is reaching somewhere. Okay, so that is epsilon. Now see, we can have epsilon, or we can have a single terminal like x drives a, or we can have a single terminal followed by a no, single non-terminal. Okay, so these are valid examples of your regular grammar. Okay, so now let us take one example. Like suppose there is a language given in which it is saying that it consists of the strings or the words from alphabet A and B star, means the words made up of A and B star, and the word length is even or the word length is odd. If suppose it is given that the word length is even, what does this mean? It means that it can take the words made of A and B and its length is even. Means its length can be 0, its length can be 2, its length can be 4, its length can be 6, and so on. Now 2 length 0 is the minimum, but we can have start from 2. Since we know that we have the meta character star, which means 0 or more, so we can use this star with this smallest length string. Okay, so we can have the smallest length string of A and B of two lengths. What it can be? It can be AB, it can be BA, it can be AA, it can be BB. We can have this four different strings of length 2. Okay, so we can write this AB union BA union AA. We can simply write or it is better to write or in place of union, or BB, and we are saying that it is star. So for or we just write plus here. We just write plus here, AB plus BA plus AA. In regular expression, we write plus here for or. Okay, so we write plus star. So if we suppose we do not want any characters, zero appearance of this, so we'll take 0. So in that case, that is also the word length will be even. If suppose we are saying that the word length is even.
Okay, this mod operator means we are talking about the length of the word. The word length is even, so it can have A B B A B B B. The smallest two length, the smallest is 0, but we can start from 2 only. Okay, for understanding. Otherwise, it will be blank. So we'll take this one and we'll put the star over here. Okay. So star means only 0 or more. We have seen many examples of this. Like suppose if we write A star. A star means we can have 0A, that is epsilon, or single A, or double A, or triple A, and so on. If I write AA star, what does it mean? We have two A's, 0 or more appearance of 2A. So what does it mean? It simply means the length of this is 2 and length of this is 2, but it can have 0 or more appearance. So if we take the 0 appearance of this, so it will be epsilon 1, then this one is called this. Then you can have 2A or 4A or 6A and so on. So that is what we have discussed here, that we are talking about here. It is on AB. So we are making string based on AB. Here in this case, we are just taking double A whole star. So it can have only double A, double A, double A, and so on. So it can have 0 appearance of this, or 1 appearance, or 2 appearance, or 3 appearance of this, and so on. So from this rule, what we have learned that the regular grammar can have one non-terminal on the left hand side, and on the right hand side it can have epsilon, it can have a terminal, single terminal, or it can have a single terminal followed by a non-terminal, and it can have also a non-terminal or non-terminal followed by a terminal. It can have also a non-terminal followed by a terminal. So how we'll write this? Like x. So this one x derives y. So it is what? Non-terminal followed by terminal. So it can have this type of. So we can write all these structs like s derives a, or s derives epsilon, or a derives as, or a derives sa, but you cannot have s derives a t a. Means we can have only single terminal followed by terminal, or single terminal followed by a single non terminal followed by a single terminal. ठीक है, क्या मतलब हुआ कि एक सिंगल टर्मिनल होगा और एक सिंगल नॉन टर्मिनल होगा. टर्मिनल कैसा होता है? स्मॉल लेटर्स में होंगे, ए या बी, और नॉन टर्मिनल होगा एक राइट हैंड साइड में, या ऐसा हो सकता है, या एक टर्मिनल और एक नॉन टर्मिनल और एक टर्मिनल, ऐसा हो सकता है, या फिर एप्सिलॉन हो सकता है. ठीक है, या फिर सिंपल है, एक कोई सिंगल टर्मिनल हो सकता है, या सिंगल ये टर्मिनल, ये भी टर्मिनल है, ये भी टर्मिनल है. तो इस तरह का जितना भी रूल्स होंगे, उसके लेफ्ट हैंड साइड में तो एक नॉन टर्मिनल ही होगा हमेशा, एस या टी, कोई इस तरह का लेटर्स होगा. ओके, so now let us see
two types of regular grammar. We can have right linear grammar, and other we can have left linear grammar. So let us see about that. So we can have right linear grammar or left linear grammar. Okay, we can have two types of regular grammar. Now, how we differentiate between them? Because both are regular grammar, so you can see the non-terminal production rules will can have the productions like this, that a non-terminal derives a and some non-terminal after in the rightmost side. Okay, so like at. So single non-terminal, a single terminal followed by single non-terminal, but the non-terminal on the on this side, the non-terminal is on the rightmost part, on the rightmost side. So it is called right linear grammar. In left linear grammar, the non-terminal will be on the leftmost side of this part, like this. So this is from this side, it is leftmost side, and this is rightmost side. Okay, that is why it is called right linear grammar. This is called left linear grammar. Okay, we have seen, हम लोगों ने देखा था कि आपका जो रेगुलर ग्रामर है उसमें क्या होगा, जैसे प्रोडक्शन रूल है ए डिराइव्स बी, सपोज ये कोई प्रोडक्शन रूल है, तो उसमें क्या होगा, इसको हम क्या कहते हैं, ये क्या है, राइट हैंड साइड है और ये लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है। तो रेगुलर ग्रामर में क्या होगा कि लेफ्ट हैंड साइड हमेशा क्या होगा, नॉन टर्मिनल होगा। राइट हैंड साइड में क्या क्या हो सकते हैं, एप्सिलन हो सकता है, या एक सिंपल टर्मिनल हो सकता है, या सिंगल टर्मिनल फॉलोड बाय नॉन टर्मिनल, सिंगल नॉन टर्मिनल, यानी एक टर्मिनल फॉलोड बाय सिंगल नॉन टर्मिनल, या नॉन टर्मिनल फॉलोड बाय टर्मिनल। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि ये क्या है, टर्मिनल फॉलोड बाय नॉन टर्मिनल, जिसमें कि सिंगल टर्मिनल फॉलोड बाय सिंगल नॉन टर्मिनल है ना। यही यहाँ पे ये कहता है कि इट कैन हैव अ सिंगल टर्मिनल फॉलोड बाय नॉन टर्मिनल एंड सिंगल नॉन टर्मिनल फॉलोड बाय सिंगल टर्मिनल। तो यहाँ पे ये है, अगर ये टर्मिनल नॉन टर्मिनल है वो इसमें राइट हैंड साइड के लेफ्ट मोस्ट पार्ट पे आ रहा है, लेफ्ट मोस्ट साइड में आ रहा है, या लेफ्ट मोस्ट जो कैरेक्टर है वो ये नॉन टर्मिनल है, तो ये लेफ्ट लीनियर ग्रामर है। अगर ये राइट मोस्ट है तो ये राइट लीनियर ग्रामर है। ओके, so we'll see more about it in the next video. Thank you. If you like my video, just hit the like button and share with your friends and subscribe my channel. Thank you. Thanks for watching.